Hi, welcome to another set of 69 series. Before you watch the solution, I would highly recommend to first pause the video, solve the set, then check the solution and watch where you have lagged or might be I'm going to use some easy way to solve the set. So yeah, hope you have solved the set. Let's see the set and read what is mentioned here. So yeah, there was 6 ship. Okay, ships. बोट की बात हो रही है आई थिंक या बड़े वाले बोट की. Number 1 to 6 have to transport a certain number of articles. Okay, laptop plus headphones. So if odd number ship fail to transport all the articles assigned to it, okay, let me zoom it a little bit so that it is more visible to you. Yeah, I think it is more clearly visible. So yeah, if odd number ship fails to transport all the articles assigned to it, then it is transported by next odd numbered ship. Okay, matlab there was a ship number 1, 3, 5. So if one failed to supply the or transport the articles, so these work will done by third one. And if third one fail, then this work should be done by fifth one. And fifth fail, this work should be done by seventh one. This is something given because seventh तो होगा ही नहीं क्योंकि 6 ships हैं. तो yeah, if even number fail to transport the required number of articles, then it is transported by even number ship. Okay. सेम है अगर इवन फेल हुआ तो इवन नंबर ही उसे ट्रांसपोर्ट करेगा. इट इज गिवन. कूल, समझ गए यहाँ तक. The given table shows the number of articles to be transported by each of the ship percentage and actually percentage or actual number of articles transported out of the total number of articles to be transported. Percentage, actual number of articles not transported. Okay, ये बता रहे कि टेबल में क्या क्या गिवन है. So you can see here it is a ship number है, that is 1 2 3 4 5 6 7, not 7 5 6. Okay, total number of articles to be transported गिवन नहीं है, शायद हमें निकालना हो. परसेंटेज स्लैश एक्चुअल नंबर ऑफ द आर्टिकल ट्रांसपोर्टेड. यू कैन सी हियर, यहाँ पे परसेंटेज है, यहाँ नंबर है. तो दिस इज शुड बी परसेंटेज ऑफ दिस नंबर. जो भी यहाँ पे हो उसका परसेंटेज में ये गिवन होगा. ओके, लेट्स रीड अहेड. इनिशियली an equal number of articles were supposed to be transported by each of the ship. Okay, इनिशियली जो था इस पार्ट में, अगर ये ए आर्टिकल सप्लाई कर रहा है तो ये भी ए करेगा, ये भी ए करेगा, ये भी ए करेगा, ये भी ए करेगा, ये भी ए करेगा. Number of articles which were not transported by ship 5, 6 and 6 together were transported by spare ship. Okay, let's see. मैंने अभी जो यहाँ पे बोला था, because 5 के बाद कोई है नहीं, तो इसके बाद जो रहता ऑड नंबर वही ट्रांसपोर्ट करता जो भी इसके आर्टिकल्स जो भी ना हो शिप हुए हो. सिमिलरली यहाँ पे 6 होगा तो 6 के बाद 8 तो है नहीं, तो इन दोनों के आर्टिकल जो है एक और नई शिप बनेंगे विच वी कॉल स्पेयर शिप. ओके, एक्स्ट्रा शिप बोल सकते हो. ये जो शिप है ये ट्रांसपोर्ट करेंगी ये दोनों के आर्टिकल्स को. गॉट इट. ऑल्सो अब मुझे थोड़ा यहाँ पे लग रहा है बिकॉज इट इज गिवन कि ये वाले जो लाइक जो ये अगर फेल होगा कुछ शिप करना तो यहाँ पे ये शिप करेगा थर्ड. यू कैन सी हियर, यहाँ अगर 1200 है, ये अगर फेल होगा कुछ शिप करना तो ये शिपमेंट कौन करेगा, थर्ड वन. तो यहाँ ए के साथ प्लस में 1200 भी तो हो जाएगा, राइट. ओके, सो टिल नाउ आई अंडरस्टूड द सेट. यहाँ तक तो मुझे समझ में आ रहा है, सही सही है, नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टूड, बट हाँ ठीक ठाक कैलकुलेशन बहुत होंगे इसमें. द गिवन पाई चार्ट show the distribution of the number of headphones transported by each of the given ships out of the total number of headphones transported by all the ships together. Okay, तो जो हेडफोन के बारे में यहाँ पे गिवन है कि कितना परसेंट टोटल, अगर हेडफोन की बात कर लेट से टोटल अगर कुछ 10,000 हो. ओके, तो 10,000 में से कितने परसेंटेज में डिवाइड, तो दिस आर द परसेंटेज डिवीजन ऑफ द शिपमेंट बाय इच शिप. यू कैन सी वन नंबर है, मतलब कि शिप 1 ने 25% ट्रांसपोर्ट किया, शिप 2 ने 10% किया टोटल का. टोटल मतलब टोटल हेडफोन्स का, इट इज गिवन ईयर. तो यहाँ तक समझ गया. what else mentioned given, the number of, okay, the sum number of laptops transported by
given 6 ship is this, तो जो टोटल सम नंबर ऑफ ट्रांसपोर्ट लैपटॉप्स जो है ना वो इतने थे जो ट्रांसपोर्ट हुए, तो ये 6 मिला के इतना लैपटॉप ट्रांसपोर्ट किए। इट इज़ फॉर आर्टिकल, इट इज़ फॉर आर्टिकल, इट इज़ गिवन, तो मतलब कि ये दोनों मेंशन है इसमें। ये जो आर्टिकल वाला पार्ट है, हियर इट यू हैव गिवन लाइक यू कैन से लैपटॉप प्लस हेडफोन दोनों को मिला के यहाँ पे जो है नंबर्स गिवन है। ओके, तो बिफोर आई सॉल्व अहेड एंड मेक अ टेबल दिस अगेन, आई वुड लाइक टू गो टू अ क्वेश्चन एंड सी कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या अननेसेसरी सॉल्व कर कुछ फायदा नहीं है। लेट्स सी, फाइंड एवरेज नंबर ऑफ लैपटॉप्स ट्रांसपोर्टेड बाय शिप 2 एंड 6, वो लैपटॉप के बारे में। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स ट्रांसपोर्टेड बाय स्पेयर शिप, ठीक है। Find the ratio of number of laptops transported by ship 3 to the number of articles. Okay, laptops क्या again. Number of laptops transported by ship 4. Okay, again laptop. You can see सारे लैपटॉप हैं। मैं लैपटॉप कैसे निकाल सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास लैपटॉप के लिए डायरेक्ट कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है गिवन। दे जस्ट हैव गिवन अस द डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन इज इतने नंबर है, एंड मतलब हमें यही निकालना पड़ेगा, ये भी निकालना पड़ेगा, देन वी हैव टू subtract it, then we will get a number for laptop, right? So let's make a table. Here I have created two table. You can see ship, here is a ship, there is numbering 1 2 3 4 5 6. Here TBD, it means to be transported. Here actual transportation, it means if there here is 100 transportation, मतलब हमें 100 transport करना था and transport हुआ 80, तो you can we can add here 80. This is not transported, that's why NT. So actually we need three table. One is here already I have. Okay, this is for article, this is for my, you can say, headphone, because the data has given for me for headphone, and this is for the last one, let's say laptop. Okay, so let's solve this articles part. So you can see there is nothing mentioned about how many values, like here we can say यहाँ पे a plus होना चाहिए कुछ, but we don't know what is exact value of a. So how to find this a? So as I told you, here if the in this part, if there here is a, here is a, here is also a, here is also a, here is also a, here is also a, because it is given to us. It is given key an equal number of articles were supposed to be transported by each ship. So I would say there are 6 A's which should be transported by each ship, like 1 A for each ship. Now you can see here these values going to added here, as I told you earlier. Now you can see because they have given to me these two values, so I could clearly assume that if this number of articles have and 25% not transported, what it mean? मतलब 25% transport नहीं हुआ, but 4500 transport हो चुका है. It means this value is 75%, right? If this is 75%, then only this will become a 25%. So if the value is given to me, that is 75%, I would simply say that is 75% is equal to 4500. So my 100% should be nothing but how to find this? Simple है, divided by 75% into 100. So here you will get the value, and it is around, if I'm not wrong, it is 4. Okay, it is 6000. So this value is 6000. If this value is 6000, so it means the total means this value, this total, इसका वैल्यू 6000 था, अगर इसका 6000 था तो 1200 अगर मैं माइनस कर दूँ तो एक ही वैल्यू मुझे यहाँ से मिल गई। तो वैल्यू फॉर ए इज नथिंग बट 6000 माइनस 1200, दैट इज 4800, right? So yeah, I got the value for a. So value for a from here is, let's erase this part. This is 4800, and this should be also 4800. This should be 4800 plus 1200, that is 6000.
This is also 4800. I don't know इसमें कितना ऐड होगा, so that will be here also 4800 plus and 4800 plus. So let's find the other values for the same. So you can see here 1200 यहाँ पे है, मतलब कि 3600 should be transported. ठीक है, then only 1200 जो था वो ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ. 80% of this value, so 80% of this is not transported. It means 20%, sorry, it is transported, so 20% transport नहीं हुआ होगा. So let's find the 80% of this. So 80% of 4800, let me simply minus the 20%. It will be a better way. So 20% of 48, 20% of 20 into 48, this should be nothing but 960. Yeah, 960. So if 960 is this, I could simply minus 960 from 4800, so that I will get this 80% value. So the value for this is 0 4 8 3. I think it is not clearly visible. Let me change the pen color. So 3840 is the value for this. Sorry. Next, you can see here, this is 2880. Okay, or you can simply find this 25%. 25% is nothing but ये है 4500, तो यहाँ 1500 हो जाएगा. Also, this 960, it will going to add here, right? Because इवन नंबर है, इसने ट्रांसपोर्ट नहीं किया, तो कौन ट्रांसपोर्ट करेगा, उसे इवन नंबर ही कर सकता है. So it will going to add here. तो जो वैल्यू बन जाएंगी इसकी टोटल वैल्यू, you can simply say 4800 plus 960. तो 4800 में 960 if I add, so I could simply get 5. Okay, let me add. बच्चों वाले तरीके से कर लेते हैं इसको ऐड. So 480 plus, okay, by back 0 6 9 plus 8, that is 17. 17 7 carrying 1, that is 5 5760. So यहाँ पे not transported value क्या है, 2880. So simply minus it from here so that you will get the transported value. So 2880 अगर माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0 8 8 2. अच्छा, सेम नंबर बन गया. वाओ, कूल. नाउ अगेन, ये थर्ड वाले के बाद जो 1500 था, जो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाया, दिस गोइंग टू ट्रांसपोर्टेड बाय फिफ्थ वन, राइट? तो यहाँ पे हम 1500 ऐड कर दो, तो टोटल बिकम व्हाट? सो टोटल यहाँ पे जो था आपका ये, लेट्स चेंज दिस वैल्यू सो दैट, तो 4800 प्लस 1500 अगर मैं ऐड कर दूँ तो हो जाएगा 6300. या 6300 ये हो जाएगा. So erase this and make it 6300. This value becomes 6300. 60% of these are transported. So if 60% is transported, so 60% of this is nothing but, we multiply it, 0 6, this is 17 8 carrying 1, 6 6 36 7 37. So 3780, these are the articles are transported. So not transported निकालना है तो simply minus it. If I minus this value from 6300, so I will get only 0 2 5 2. Yeah, and yeah, in this sixth one case, जो भी फोर्थ का जो ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुआ तो सिक्स वाला ट्रांसपोर्ट कर देगा. इट मीन्स हियर आई हैव टू ऐड 2880. So if I add 2880 here, so what I will get, I would simply get this value, that is 0 8 6 7. This is the value which I will get. तो इरेज करके मैं सही से लिख देता हूँ. There is my pen. 7680. Here 5760 is already transported. What left? Simply subtract it.
यहाँ पे आ जाएगा आपका that is 0 and this is 2, this should be 9 1 1920. This is the value, and I think there was one question related to the same. There was a question like how many articles are transported, something ऐसा कुछ था, और by spare ship. Yes, spare ship. So this is the question, I think. Find number of articles transported by spare ship. स्पेयर शिप कितना ट्रांसपोर्ट करेगा, तो इट इज क्लियरली मेंशनड हियर आर्टिकल विच आर नॉट ट्रांसपोर्टेड बाय फिफ्थ शिप एंड सिक्स्थ शिप, दोस आर गोइंग टू ट्रांसपोर्टेड बाय स्पेयर शिप. तो इन दोनों का सम जो है दैट शुड बी आंसर. So let's add it. What we will get? So we will get a 0 4 and this should be 14 4 carrying 1, that's a 4 4 4 0. So yeah, 4440 is the answer for this question. नाउ यू कैन सी गाइस, जब भी हम सेट सॉल्व करते हैं तो हमारा मकसद है क्वेश्चन सॉल्व करना, नॉट वी आर गोइंग टू सॉल्व ऑल द थिंग. अगर नेसेसरी नहीं है तो हम इसे इग्नोर कर देंगे. सो दैट्स वाई जिसके वैल्यूज आते जा रहे हैं मैं सिंपली उसे पुट करते जा रहा हूँ एंड वहाँ पे सॉल्व करते जा रहा हूँ, सो दैट बाद में जाके वो बर्डन ना बन जाए मेरे लिए. एंड आई कुड सिंपली गेट, अगर कुछ क्वेश्चन नहीं आते मैं सिंपली स्किप कर दूंगा. एंड बिकॉज when you are solving any this kind of sets, let's say a DI set or LR based DI something, that time I highly recommend you to go to a question, check the question, solve the question by question if possible. So let's go for next one. Let me see if any question is possible to solve. Okay, transported by ship 4 is how much percent less? Okay, this okay laptop, because I have to find laptop. So before we go for laptop I have to find the this value too, right? So also it is given that these number are the total number of laptops. ठीक है, इतने नंबर ऑफ जो है लैपटॉप्स हमने ट्रांसपोर्ट कर दिया है. तो इफ दिस इज द नंबर ऑफ लैपटॉप्स, तो ये टोटल आर्टिकल्स है जो ट्रांसपोर्ट हो चुके हैं. यू कैन सी हियर these are the articles which we already transported. इसमें से अगर मैं लैपटॉप्स माइनस कर दूँ तो आई विल गेट द वैल्यू फॉर हेडफोन, राइट? तो सिंपली ऐड दिस वैल्यू. So if I add this value, what I will get? Okay, so total is 24360. And if I subtract it from here, तो headphones की अगर मैं बात करूँ तो ये headphones है, this should be nothing but 24360 minus 12360. This 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, and this is 12. So 12,000 is the total number of headphones which are transported. Got it? How I find 12,000? I simply added this value, the total number of articles. Then I simply subtracted the total number of laptops. So whatever left is headphone. So headphone जैसे ही मुझे मिल गया, I could simply fill this table. Okay, it is given that first वाले ने 25% transport किया है. Okay, 25% of what? 25% of 12,000. You could simply find 25% of 12,000. Or solving these instead, what I can do, I would go for question by question. Let's see. Find the average number of laptops transported by ship 2 and 6. शिप 2 और 6 ने कितना ट्रांसपोर्ट किया है? तो ये है 2, ये है 6. इन दोनों के ट्रांसपोर्ट का एवरेज नंबर मुझे चाहिए. सो इफ आई सिंपली सब्ट्रैक्ट number of headphones transported by these ships, I could simply get the answer, right? You can see इनका सम कितना है, that is 3840 for the second ship plus for the sixth ship, total value is 5760. Simply add these values, so I will get that is 0 0 carrying 1 886 carrying 1, that is 9600. And the headphones, सेकंड नंबर पे जो हेडफोन है 10% हेडफोन था, 10% ऑफ 12,000. सिक्स पे 20%, तो इन टोटल 30% ऑफ 12,000. So you could, I could simply find 13% of 12,000. तो 13% of 12,000 जो बनेगा, this should be 36, like 3,600. So
Okay, is it 3600? Mm-mm. Yes. So simply that 9600 minus 3600. उप्स, या तो आंसर ही नहीं आ रहा. ओके, एवरेज निकालना है ना. कूल. तो यहाँ से मुझे मिल रहा 6000. तो 6000 एवरेज पूछा है दोनों का, तो दोनों का एवरेज दो वैल्यूज है, सिंपली डिवाइडेड बाय 2, तो आई विल गेट 3000 एज एन आंसर. दैट इज ऑप्शन बी. Next one, the ratio of number of laptops transported by ship 3 to the number of articles transported by ship 1. Ship 3, ship 1. Okay, तो शिप 3 का लैपटॉप्स चाहिए. शिप 3 में टोटल कितने आर्टिकल्स गए थे? दैट इज 4500. इफ टोटल आर्टिकल्स जो हमने भेजा वो 4500 है, तो लैपटॉप्स कितना था? सिंपली माइनस दैट 3, मतलब 5% ऑफ 12000. तो 5% ऑफ 12000 अगर मैं यहाँ से माइनस कर दूँ, so I will get my value for headphones, sorry laptops. headphone माइनस करूँगा तो लैपटॉप मिल जाएगा. So here I will get that is 4500. एक्स्ट्रा जीरो हो गया, total 560. So 600 if I minus simply, so I will get 3900. These are number of laptops. Okay, and yeah, if I see the options, by simply seeing the options you can see the 12. It is not a multiple of 12 but it is a multiple of 10. तो 12 वाला तो एलिमिनेट कर दो. 15 15 का मल्टीपल तो नहीं है ये, बट हो सकता है कुछ बन जाए 15 तो, बट 15 तो नहीं बन पाएगा. 10 हो सकता है, और these are ऑप्शंस बाय सीइंग दिस नंबर बिकॉज इट इज मल्टीपल ऑफ 13. तो 13 हो सकता है, 10 भी हो सकता है बिकॉज मल्टीपल ऑफ 10 है. 15 डायरेक्ट दिख नहीं रहा बट शायद हो सकता है. आई डोंट नो, लेट्स सी अहेड. आगे देखते क्या है. टू द नंबर ऑफ आर्टिकल ट्रांसपोर्टेड बाय शिप 1. शिप 1 में कितने नंबर ऑफ आर्टिकल ट्रांसपोर्ट हुए हैं? शिप 1 में 3600. 3600. So divided by 3600. Simply cancel it. You can see अब तो 10 भी खत्म हो गया. 15 तो पॉसिबल ही नहीं है कि दिस इज द ऑप्शन. सिंपली खत्म. सॉल्व भी नहीं करना है, और सॉल्व करना है तो आप कर सकते हो. 3 से डिवाइड कर दो बोथ, विल गेट 13 एंड 12. ये टेबल मैंने फालतू ही बनाया, कुछ काम नहीं आ रहा. Fourth, the number of laptops transported by ship 4 is how much percent more less than the number of articles not transported by ship 2. Okay, okay, ठीक है. Number of laptops transported by ship 4. So let's find number of laptops transported by ship 4. So let me erase this. So number of laptop transported by ship 4. So where is the ship 4? So ship 4 transported 2800 articles, 880 articles. And out of these, how many headphones are there? So ship 4, we're talking about ship 4, 15% of 12,000. So 15% of 12,000 is nothing but 1800, right? 15% of 12,000, 1800 ही तो होगा. Yeah, 1800. So if I simply subtract it, I will get my value like a number of laptops. So I could simply subtract it. So I will get number of laptops is 1080. These are the number of laptops transported by ship 4. Is how much percent of the number of articles not transported by ship 2? Number of articles not transported by ship 2 is 960. 960. So 1080 upon 960. Is it how much percent? Okay, more or less. More or less, so simply subtract it. So subtracted, you could simply see it is a more not less, तो less तो option रहनी चाहिए, more है. ठीक है. Okay, comparison में तो या तो more है, तो if I simply minus it I will get the value
960 तो ये मिल रहा है मुझे 120 upon 960, 0 0 cancelled, and if I could simply see, it is something around a 12.5%. Yeah, you could simply divide this 4 by 4. Let's say you can say 4 3s are 12, 4 2s are 4 4s are 16, and then 3 1s are 3, 324. So you, if you know the fractions like 1 by 8, nothing but 12.5%. So answer for this is option B, that is 12.5%. The difference between the number of laptops transported by ship 1 and 5. तो नंबर ऑफ लैपटॉप 1 और 5 के बीच में डिफरेंस पूछा है, कितने ट्रांसपोर्ट हुआ है. ओके तो 1 में दैट इज 3600 आर्टिकल्स वी हैव ट्रांसपोर्टेड. तो 3600 जो आर्टिकल्स थे, इसमें से लैपटॉप कितने थे और हेडफोन कितने थे. 25% of 1200, this is nothing but 1/4 of 1200, that is 4000. 1/4 of 1200, that is 4000. एक मिनट, सॉरी माय बैड. 12,000 है, 12,000 का 25%, that is 1/4. 3000, सॉरी ये तो बोलूँ कैसे, इतना कैसे आ रहा है. तो 600 जो है ये थे नंबर ऑफ लैपटॉप्स. okay, these are number of laptops transported by ship 1. And for the next one is, next case is what, 5, ship 5 है कितना था, that is 3780. 3780 simply minus the number of laptop, sorry, number of headphones, I will get a number of laptop. So which one is fifth was 25%, again 25% is 3000. तो यहाँ से 780 मिल रहा है. And the question is asking me what difference between these two values. So 780 160, like 780 minus 600, so 180 is the answer. Okay, so this is all this set, a doable set. I won't say it is a difficult one. It is a moderate set because यहाँ पे अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये 1200 को कैलकुलेट करना है या फिर इससे करना है, तो थोड़ा सा इशू जाएगा. Otherwise the set was good. You can see initially I also created these two tables. I thought कि मुझे सब कुछ सॉल्व करना पड़े, बट इसकी नीड नहीं पड़ी. रीजन बिहाइंड, आई सीन द क्वेश्चंस एंड आई सीन कि या भले उसकी नीड हो सकती थी, बट उसके बिना भी सॉल्व कर पा रहे हम. यू कैन सी दिस क्वेश्चन, थर्ड वन, इसे तो हमने ऐसे एलिमिनेट कर दिया था. तो क्वेश्चंस आर डूएबल, नॉट वेरी टफ. द सेट वाज मॉडरेट. डू लेट मी नो कैसा लगा आपको सेट. मॉडरेट लगा, डिफिकल्ट लगा, कमेंट सेक्शन में बताओ. जय सिया राम.